So our for lunch for today is dal palak. Dal palak it's palak it's Spinach. So we mix that. Then we grind that, and then the partner of dal palak is Meetha Kaddu. Meetha Kaddu is pumpkin. In our language is a kalabasa. So that is the both partner. This is dal. First we will boil, and we will add garlic, haldi, 2 ras haldi, lal mirch. This is lal mirch. We will just boil, and we will proceed to our next procedure. तो ये देखो अभी तक हो गया ये थोड़ा सा little bit half done. So we will add एक प्याज, ये देखो ये प्याज है और टोमेटो, ठीक है, ये दोनों है, ये प्याज और टोमेटो, एक प्याज और टोमेटो, ठीक है, लेकिन टोमेटो तो छोटा है, पर 2 डालो. एंड दिस इज पालक. tada! पालक भी अभी भी डालो. And just mix so the palak will go down. बाद में 10 मिनट दोबारा मिक्स करना. चूल्हा बिल्कुल स्लो है, ठीक है. अच्छा गाइस, सो नाउ इनकी दाल तो है, इनके साथ भी है. अच्छा ये अभी मैं दिखा दूँ ये कौन सा इनके पार्टनर है. ये तो सब्जी है ना, सब्जी और दाल पालक, और इनकी भी है, इनके पास they have also pair with that to eat. So I'm going to show you what I'm going to cook. They call this Meetha Kaddu. In the Filipino this is kalabasa. In English it's pumpkin, ठीक है. So in Pakistan इनके नाम डिश क्या है, Meetha Kaddu, ठीक है. अच्छा ये देखो, अच्छा गाइस ये देखो इनके इंग्रेडिएंट्स है pumpkin और ये लहसुन और हल्दी और लाल मिर्च. बहुत ज़्यादा मुझे नहीं डाला, कितनी चाहिए आपको वो लग रहा है बहुत ज़्यादा पम्पकिन है, पर चेक करके. अच्छा ये देखो ये करी पत्ता, ये खुशबू भी अच्छा है, और ये राई, ये देखो थोड़ा थोड़ा सा मैंने यूज़ किया, और ये भी ज़ीरा, ठीक है. चलो अभी मैं दिखा दूँ मैं कैसे बनाऊँ. अच्छा ये देखो पहले मुझे तेल डाला, अभी तक तो गरम तो नहीं है. अच्छा इनकी ये है ना लहसुन और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर. सो आई विल ऐड दिस वाटर. ओके, सी आई ऐड सम वाटर. सो इट्स हॉट ना, इट्स गरम ना द तेल. सो पहले अभी मैं डालूंगी राई. दिस इज द राई, ठीक है. बिस्मिल्लाह. पहले राई मुझे डाले. ये देखो इनकी बबल्स आ गए ना ऊपर, अभी तो नहीं दिखा. ये देखो बबल्स है ना. फिर राई ज़ीरा भी मैं डालूंगी, ये अभी तक तो नहीं है, लेकिन तेल तो गरम हो गया बिल्कुल. और ये देखो हो गया बिल्कुल, बबल्स आ गए. इट्स लुक लाइक इट्स बॉइलिंग ना, सो इट्स लाइक दैट. सो नाउ ज़ीरा, दिस इज द ज़ीरा गाइस. ये देखो ये ज़ीरा है. एंड करी पत्ता जल्दी डालो, और बॉयल हो गया, लेकिन चूल्हा तो स्लो है. ये करी पत्ता खुशबू का है ना, खुशबू बिल्कुल. और ये मैं डालूंगी ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और
लहसुन पेस्ट, ठीक है। ये 5 मिनट और 2 मिनट हो जाएंगे। थोड़ा सा खुश हो गया पानी, फिर पम्पकिन भी मैं डालूंगी। देखो पानी तो थोड़ा खुश हो गया, ये अभी मैं डालूं। पम्पकिन फिलीपीन में बोलती है कलाबासा, ठीक है। और चूल्हा भी बिल्कुल स्लो करना, सही है। और चूल्हा स्लो करना, दोबारा ढक्कन लग गया, ठीक है। Then when it's done na, it will be soft, and then we will add some salt, and then we will add some sugar, so it will be like little bit sweet. That is the secret of my mother-in-law. So guys, ये देखो दाल तो हो गया, दाल पालक. So now we will blend. I already put it here. It's cold now also. So now we will blend it. Then we will boil it again, and we will add some sour. It's katta. They call it in Pakistan imli. So we will add an imli. I'm gonna show you how I add the imli. So guys, ये देखो हो गया. I blend. So now we will transfer in the big pot, and we will add the imli water. Okay. Here, this is the imli. It's what I'm gonna do is I will add some dish of water, and I will clean it first. See, I will clean this first, and I will throw this water because some of the some of the imli, this katta, this sampalok. In our language, this is sampalok. लेकिन in Pakistan तो इनकी बोलते इमली. So ये देखो मैं क्या करें ऐसे. I'm gonna do this like that. I will take the sauce of this imli. So the water, it will be katta sour. Katta is sour, okay? And then after that, I will transfer it here, but don't add the seeds, okay? Don't add the seeds. So I will do like this. See, I will put it here, and if it's come, we will add again more water. You have to check if it's the sour is enough or not enough. Okay, so ये देखो हो गया. See, I did not add more water because I feel it's enough. Because once you add too much water, then it will be like only water. So must be like this. You have to maintain the water, that it's not gonna be like only water, your food. Okay, see, as you can see. Then now I will add some salt. This is the salt. If it's calm, if it's not enough, I know how much I use the salt. That's why I add 1.5, because I know it will be enough. So if you use tuna every day that you are cooking, you know how to manage about the salt. Okay. If it's salt too much or if it's calm. Okay, so now we will wait until it boils. After that, I will just add some of chili, because so taste will good. If it's the spicy are not enough, so I will just add this. What I do is I make it whole like this, so the taste it come out, and the taste it will be good and perfect. So now we will wait until it boils. Okay, so for now I do oil. So I will add here in the dal. So now it's boiling, everything are perfect. So first I will make it brown with piyaz.
the onion. Pyaz is onion. In Urdu it's a pyaz. In English it's onion. And our language is sibuyas. Okay. So we will make it brown, and we will add some of the zira, राई and curry patta. ठीक है? Once the pyaz are brown, so we will add the rai and zira and curry patta. Okay? So guys, brown हो गया बिल्कुल. मूवी जिसको अच्छा भी मैं राई ज़ीरा में डाला, और ये ज़ीरा भी है बिल्कुल, करी पत्ता भी है. ठीक है, देखो खुशबू भी आ जाएंगी बिल्कुल. And covered. One also the pumpkin मीठा कद्दू. ये देखो मुझे तो पानी मिक्स किया, अभी तक तो पानी है. चूल्हा थोड़ा सा तेज करो. ये बिल्कुल हो गया. ये देखो. We will check the salt. So now it's soft हो गया. So we will add some salt. Just small, not too much. And mix again to combine the salt. And after that we will add some sugar. So it will be sweet. This is how they call Meetha Kaddu. Meetha is sweet. Okay. So we will wait until more 5 minutes or 10 until we see the oil is coming up. ठीक है? So now we will check. It's almost done. See. We check the taste. It's okay. So it's done. We will off. So our lunch for today is done. Thank you for watching for our YouTube channel, and please don't forget to subscribe and click the notification bell. So if you are new in my channel, and if you have any request for our Filipino food, and if you are Filipino, so that you have any question or request that you want to learn about the Pakistan, just comment below, tell me, so I will do that. Okay guys, thank you for watching. Allah Hafiz.